नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। गांधीनगर के कोठा गांव में माता हड़कक्षा का मंदिर है। यह मंदिर 500 सालों से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। यहां चैत्र महीने के अंतिम रविवार को मंदिर में हवन और भंडारे का आयोजन होता है। इस दिन हजारों भक्त जन पैदल चलकर माता के दर्शन करते हैं। यहाँ महाकाली युवक मंडल के गणेश भाई, कांति भाई चुनारा, सुखराम भाई, बच्चू भाई चुनारा, निकुल भाई, रोहित भाई दंतानी, नितिन भाई, रोहित भाई दंतानी, अश्विन भाई, महेश भाई, साथी विक्की भाई, दिलीप भाई चुनारा द्वारा भक्तजनों की सेवा के लिए कैंप का आयोजन किया जाता है। भारत न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मानवेंद्र सिंह ठाकुर। બીજા ભાઈને મળીએ, એમનું નામ અને પરિચય લઈએ। નમસ્કાર સાહેબ। નમસ્કાર બેન। હવે આપણું નામ પરિચય આપો। ગણેશભાઈ કાંતિભાઈ ચુનારા, ઓટો ગામ। હા, અને આપણે અહીંયા ક્યારથી સેવા આપો છો? કયું ગ્રુપ છે? અમે 10 વર્ષથી સેવા આપીએ છીએ। બરાબર, મહાકાળી મંડળ મિત્ર મંડળ છે। હા, બરાબર, આપણે પ્રસાદનું ભંડારો રાખીએ છીએ। ઓકે। હવે તેમ કે અહીંયા કેટલા જે મેઇન છે એમનું નામ તમે જણાવશો? એક તો સુખરામભાઈ છે, ભાઈ વિક્રમભાઈ છે, ભાઈ અશ્વિનભાઈ છે, ભાઈ મેલાભાઈ ઠાકોર છે, ભાઈ નીતિનભાઈ દંતાણી છે, પછી રઘુભાઈ છે, પછી ભરતભાઈ છે, 10-15 ગામ બેન છે। ओके। और तमें नमस्कार, मेरा नाम मानवेंद्र सिंह ठाकुर, मैं भारत न्यूज़ में से। आज कोठा गांव में गांधीनगर जिले में हम आए थे। आज माता जी का जैसे प्रसंग है, आज हम ये भाई से मिलते हैं, उनका नाम और परिचय लेते। नमस्कार साहब, आप परिचय पहला आपको। મારું નામ સુખરામભાઈ બચ્ચુભાઈ ઓટો ગામ। और साहब आप प्रसंग શું છે, શું ક્યાંથી માતા અહીંયા છે અને શું માતાનું નામ છે? આ માતા એ ગાડી 500 વર્ષ જૂનું મંદિર છે, બરાબર, ત્યાં ગાડી અમે સેવા કરીએ છીએ। ઓકે। રક્ષા માતા। રક્ષા માતા।